Hello children, we have learnt about the poem Trains from class 3rd English NCERT in the previous video. Now let us see the new words, question answers, etc. New words: mountains, mountains, mountains means pahad. Next is passengers, passengers means yatri. Rivers, rivers means nadiyan. Precious, precious means कीमती. Mail, mail means चिट्ठियाँ. Plains, plains means मैदान. Dusk, dusk means evening, शाम. Dawn, dawn means early morning. सूरज निकलने से पहले जब हल्की हल्की किरणें निकलती हैं उसे बोलते हैं dawn. You have to write these new words 2 times in your English copy. Again repeat it. New words: mountains, passengers, rivers, precious, mail, plains, dusk, dawn. Now let us see reading is fun. Question 1 is, where do the trains run? Answer is, the trains run through the mountains, plains and rivers. ट्रेन्स कहाँ से चलती हैं? माउंटेन्स के अंदर से, प्लेन्स पे से, रिवर्स पे से चलती हैं. What are the precious loads that they carry? कौन सा ऐसा कीमती सामान उन ट्रेन में होता है? Answer is, they carry our luggage, important papers, letters, parcels, etc. वो हमारा सामान कैरी करती है, इम्पोर्टेंट पेपर्स, चिट्ठियाँ, जो हमारे पार्सल्स है उन सबको ट्रेन कैरी करती है. When do the trains run? ट्रेन्स कब कब चलती हैं? The trains run from morning to evening, from day and night. ट्रेन्स सुबह से लेकर शाम तक चलती है, दिन में चलती है और रात में भी चलती है. What is dusk and dawn? Dusk और dawn का मीनिंग क्या है? Answer is, dusk is the time when the sun is going to set. जब सूरज डूबने वाला होता है उस टाइम को बोलते हैं dusk. And dawn is the time when we see the first light of the day. और dawn वो होती है अर्ली मॉर्निंग जब सूरज की पहली किरण हम देखते हैं उस टाइम को बोलते हैं dawn. Now let us write. Describe an interesting train or bus journey you have taken or would you like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and phrases. आपको इन वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी के बारे में या बस जर्नी के बारे में लिखना है, या आपने पहले से ऐसी कोई जर्नी की है या आप आगे करना चाहते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है. अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है. आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो टू हरिद्वार. There were many people at the railway station. My father took the tickets from the crowded ticket window. I took the window seat. The train started with a loud whistle. It soon took speed. I saw hills, rivers, big and small trees through the window. तो वहाँ पर जो वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं उनको यूज़ करके मैंने ये पैराग्राफ लिखा है. आप अपने हिसाब से भी कोई पैराग्राफ किसी जर्नी के बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स. वन इज डन फॉर यू. अब आपको लैंड, एयर, वाटर इस कॉलम में उनके हिसाब से जो बॉक्स, हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज करके आपको सही से कैटेगराइज करना है. लैंड ट्रांसपोर्ट में आएगा बस, कार, ट्रेन, ट्रक. एयर ट्रांसपोर्ट में आएगा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. वाटर ट्रांसपोर्ट में आएगा शिप, बोट. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब जो वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में उनको यूज करके आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. जैसे गिव मी सम, फूड आएगा या क्लोथ आएगा. टू ईट के साथ फूड आएगा. गिव मी सम फूड टू ईट. प्ले विथ मी और ग्रे, प्ले विथ मी. स्विम अक्रॉस द रिवर और द बोट. Answer is the river. Let us get on the train or dawn. Let us get on the train. Complete this work in your English copy.
Now say aloud. Male, fail. Dawn, on. Planes, trains. Engine number 9. Engine number 9. When she has polish, she will shine. Engine number 9. 10 will ride on the Shimla line. You have to learn this poem and also write down in your English copy. Learn all this work and also this poem. Bye students, take care. Thanks for watching.